So today we'll start another theory regarding the chemical bonding. So this chapter, that is VSCPR, as well as the theories are belong to the part of our chemical bonding. Okay, so and the second part of our chemical bonding, chemical bonding. Uh, the second part of our this chemical bonding, or the second theory regarding that chemical bonding, that is molecular orbital theory. Okay, this is what molecular orbital theory. So again, this theory is proposed by very renowned, one can say, the professor. There are various limitations for VSCPR theory. That theory doesn't include the type of orbital mixing, energy, okay, stability, and this theory is only restrict to P blocks only. Okay, that means it can't explain the structures, the bonding, and etc. for remaining elements from other orbitals, like from blocks like S block, like D block. Okay, now we have another theory which is somewhat modern. Okay, this shortly we can call as a MOT. So you may heard about that molecular orbital theory. So basically what this theory which gives us idea about the properties of uh, molecules. Okay, properties of molecules like bond order, bond energy. Okay, then bond strength, one can say. Okay, and some concept in diatomic as well as polyatomic molecules. Okay, so this theory is again have very interesting type of principles as well as their application also. Okay, now before proceeding to this theory, that is molecular orbital theory, we'll first look to that how a molecules are going to form. Generally, a molecule is formed by that there is a two types of forces are there. You know that. Simply example, suppose and this is an one atom as an A having its own electron cloud, and this is of atom is B having also its own electron cloud. Okay. Uh, uh, Now we can here. So the size and other factors we are not going to consider here. Okay. We are just look how this molecules are going to form. Suppose this is A as an atom having positive charge at the center, B is another atom having positive charge at the center in this nucleus, and this is what electron cloud. Some numbers of electrons are there. So basically, this is called electron cloud, which is surrounded by the nucleus, right? Now, A and B going to form a molecule that is called AB. A and B going to form a molecule that is called the AB. Now, during this molecule formation, there are two types of forces are responsible. One is going to called as a attractive forces, that is AF is equals to the repulsive force. Now, which one is called attractive force and which one is called repulsive force? You know that generally positive charge interact with the negative charge. That type of the phenomena is called as a force of attraction, or that process is called a force of attraction. While the negative charge and negative charge or same charges are going to repel. So here during this molecule formation, attractive forces, that is the positive and negative charges, are come closer very fastly. Similarly, the negative charges are going to be repelled to each other, and that both forces are an equal amount. Okay, that is the way in which we are going to form a molecule. Now, how the molecules are formed? The molecules are formed by the interaction of atomic orbitals. Okay, interaction of our atomic orbitals. Now, generally for formation of any molecule, there are something is responsible. Like example, size of an orbital, okay, shape of the orbital, energy of particularly that orbital, and later on that is called the overlap. First three factors decide the last one. That means what here? Size of orbital must be similar, shape of the orbital must be similar, energy of orbitals particularly it must be comparable, and if first three factors are what quite similar, then overlap is going to be a strong, and that will be results in the formation of a bond particularly. Okay, so anyway, this is the way to make a molecule now. Okay. Okay, got it. Now let's look the another concept here. These orbitals are going to form. Suppose A is an atomic orbital. A is an atomic. A is an atomic orbital, and here so we can draw the wave function of A. This is B is another atomic orbital. The wave function of atomic orbital is B is psi B. Psi is a wave function. Okay. Now when a molecule is going to form, that is AB. So now we are going to form
we are developing equation that is called psi AB. That is a wave function of molecule psi AB. This molecule is formed by the two types of the process. One is called addition method, and second is called the subtraction method. Subtraction method. Now, what is called addition and what is called the subtraction method? So here, now the electron density of a particular molecule, that is phi, which include the wave function is the psi A plus psi B. That is the wave function of psi A when add with the wave function of psi B, that will give rise to the bonding character. And similarly, psi A minus psi B, that will give rise to what the anti-bonding, one can say the region, okay, and that will be called as the subtraction method. So any molecule is going to form by the addition as well as the subtraction method. Okay. Now here, molecular orbital theory is proposed by what Pauling. Okay. Later on, this theory is explained by Hund. Okay, and various other scientists are there, Mulliken, etc. Now, according to this theory, molecular orbital theory, according to that theory particularly, the theory is useful to explain the properties of a diatomic molecules as well as polyatomic molecules. Includes bond order, includes the bond order, includes the bond strength, includes the magnetic nature, magnetic property, okay, magnetic properties, and later on the bond energy also. Okay, what is the use of that molecular orbital theory? This theory is proposed by what? The Pauling as well as Hund, okay, Mulliken. This MOT is basically useful to explain the properties of a diatomic as well as, this is for diatomic as well as the polyatomic molecules. Polyatomic molecules. Especially this theory is for to find out the bond order, the bond strength, magnetic properties, and what the bond energy. Okay, bond length also. Okay, here bond length also. So these are the some highlights of molecular orbital theory. Okay. Now later on, atomic orbitals are mixed together. Here, this number of atomic orbitals are is equal to the number of molecular orbitals. So number of atomic orbitals are mixed. That will give rise to the same number of molecular orbitals. Let's say the example of H2 molecule. Hydrogen 1 and hydrogen 1. In hydrogen, 1s1 orbital is there. Okay, that is 1s orbital is there or s orbital is there. And when you mix this two hydrogen, you will give rise to the H2 molecule. Okay, that is, now if two orbitals are mixed, that will give the, if we are going to mix the two atomic orbitals of hydrogen, will give rise to two molecular orbitals of what? Now molecular orbital means H2 and atomic orbitals means 2H. Okay, that is, this type of what principle is called as a linear combination of atomic orbital. That is, the orbitals are mixed together via their increasing energy level. Via what? The increasing energy level. Now here, these molecular orbitals are classified in two ways. First of all, one is a anti-bonding and one is called as a bonding. What is anti-bonding now? Where no electron density is there, no electron density, and where actual electron density is there, and that is the region where molecule is going to be stable. So okay, bonding means stability. Now if we mix, if even number of atomic orbitals are going to mix, that will give rise to 50% anti-bonding molecular orbital, 50% bonding molecular orbital. Got it? If odd number of atomic orbitals are going to mixed, it give rise to n minus 1 as a non-bonding molecular orbital, n minus 1 remaining whatever orbitals are there, so 50% goes to, so here 1 should be at a non-bonding molecular orbital, and here n minus 1 at anti-bonding and n minus 1 at a bonding. So basically, whenever we have odd and even number of atomic orbitals are there, so that will be give rise to the particular bonding as well as anti-bonding molecular orbitals. Okay. Now let's look at the example of what hydrogen now. H2 molecule. Now H2 molecule in which this is what hydrogen, this is what hydrogen. Okay, this is 1s1, this is what 1s1. So both have single electron, both have a
single electron in that. So this is what, this is AOS, that is atomic orbital of hydrogen atom, atomic orbital AOs of another hydrogen atom. And here these are the MOs of H2 molecule. Now look at this energy level of particularly this orbital. Both orbitals are of same electronegativity. If A and B have same electronegativity, then both should be arranged in a such a way that they have similar energy levels. Example, 1s and 1s have the same energy level. Okay. Now these orbitals are mixed together to form bonding as well as anti-bonding orbitals. Example, here this is bonding and here this is what, antibonding. Okay, so this give rise to sigma 1s2 and this will give rise to sigma star 1s0. So the molecular orbital configuration of hydrogen molecule is sigma 1s2 and sigma 1s antibonding 0. Okay, so from that we can find out the bond order remaining property. This is just example. Okay. Now our question is what, how the molecules are going to form. Okay, and how this theory is give, and how this theory is applicable to find out the bond order, bond strength, magnetic properties, bond energy, and etc. The bond strength. Okay. So now there is a simple concept. The number of atomic orbitals are mixed exactly equals to the number of molecular orbitals are going to form. Okay. And now molecular orbitals are, MOs are denoted by or represented by sigma, the pi, the delta. Molecular orbitals are, remember, molecular orbitals are denoted by sigma orbital, sigma molecular orbital, pi molecular orbital, and the delta. Delta for what, the quadruple bonding. That is what the for fourth bond. For example, they have 4 bond. Okay, sigma for single bond, pi bond for what, the at least 2. Okay, and for if more than 3 bonds are there, then we are going to preference for the delta, etc., etc. Okay, these are the basically bonding molecular orbitals. Now anti-bonding molecular orbitals are denoted by sigma star, then pi star, and delta star. Okay, here the, if we compare the energy for sigma and for energy for the bonding as well as anti-bonding orbital, energy for bonding molecular orbital is always less than anti-bonding molecular orbital. That means for stability will be highest for what, the BMO than what, the ABM. That is, molecular orbitals with lowest energy will be the most stable. If we look the, now this is bonding molecular orbital, this is anti-bonding molecular orbital, this is what the energy. So ABMO with high energy and less stability, or we can call it the unstable. Now how to find out the bond order particularly for any molecule? So bond order is generally find out with the help of the simple formula, that is 1/2 into the number of electrons in bonding region minus number of electrons in anti-bonding molecular orbit. Okay, so here we have to just find out the number of electrons in bonding as well as anti-bonding. So let's look the example of hydrogen molecule. Here these are the 2 electrons which are called atomic orbitals. They are mixed together, they form a, okay, so here, so number of electrons in bonding will be equals to 2 minus 0. So 2 to get cancelled. So here 1. That means your hydrogen always have the single bond. Okay. Now bond order may be in a fractional. So let's look the example of H2 plus. We have H2 plus is the molecule. Okay. Now how to find out the bond order in H2 plus? So we have, this is what atomic orbitals, AOs of what, hydrogen atom, and this is AOs of H plus. AOs of H means 1 electron, and here this is 0 electron. When these two get combined, now how many electrons we have now? Only 1. Okay, this is what the MOs of H2 plus, and here the bond order will be equals to 1/2, 1 minus 0, that is equal to 0.5. Okay,
So that means if we remove the electron from bonding, then bond order will be increase or decrease? Yes. If electron removed from bonding molecular orbital, then what happen? And if electrons are added to ABMO, what happen? If electrons are removed from bonding, let's look at the example. Now, here two electrons are there, and if I remove the one electron, so bond order get decreased. So here bond order get what? The yes or no? Now we are going to add one electron now. So let's look at the example of a 3-electron system. Okay, 3-electron system means, so H2, whether helium 2 is exist or not, or okay, helium 2, He2 molecule. So now in He2 molecule, we have 2 electron and this level 2 electron here. When you mix together, this will be the 2 electron, this will be the 2. So bond. Now we are going to add electrons in anti-bonding. अगर हम एंटी बॉन्डिंग में भी ऐड करते तो भी क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 - 2 हो जाएगा 1/2 × 2 - 2 कितना हो जाएगा 0. दैट मींस इट आल्सो गेट डिक्रीजेस. सो अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कहां से? बॉन्डिंग से, तो भी बॉन्ड ऑर्डर आपका कम होता है. या फिर अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एंटी बॉन्डिंग में, तभी भी आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? कम होता है. ओके, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हाउ द बॉन्ड्स आर गोइंग टू फॉर्म. Okay, so look at the orbitals now. Here when s orbitals are going to mix with any s orbital, so always there is a formation of what? The sigma bond. When s orbital is mixed with the px, py, pz, and any pz orbital is going to mix with any pz, that will be give rise to the sigma bond. So sigma bond कौन कौन बनाता है? ये जितने combinations आपको दिए ये सब sigma bond वाले. Now how pi bonds are going to form? Pi bond is going to form by the just overlapping of px with another px and py with another py. समझ में आ गया? And how the sigma bonds are going to be looked. Now how sigma bonds are looked? So sigma bonds means what? Again sigma के दो types, sigma bonding, sigma anti bonding. फिर sigma bonding कैसे होगा? Okay, I will show you. Now here sigma के फिर से दो टाइप, कौन सा वाला? sigma anti bonding और sigma क्या रहेगा आपका? bonding. So sigma bonding is symmetric. Symmetric का मतलब क्या होता है? कि जिसमें आपका कौन सा सिमेट्री हो? मिरर प्लेन सिमेट्री. कौन सी सिमेट्री? मिरर प्लेन सिमेट्री. मतलब हम ऐसा ऑर्बिटल ले सकते हैं और जिसको हम इस तरह से एक मिरर, यानी कि वी कैन पास द प्लेन, इमेजिनरी प्लेन, और जिसकी वजह से वो इक्वली क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा. बट सिग्मा बॉन्डिंग जो रहेगा आपका, ये क्या रहेगा आपका? एंटी सिमेट्रिक रहेगा. एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? नो मिरर प्लेन सिमेट्री, नो सिग्मा. ओके, ये आपको आगे काम में आएगा कि इसकी सिमेट्री कैसे निकालते हैं. ठीक है, इसको अपन बाद में देखते हैं. फिलहाल में तो आप इतना समझ लो कि कौन कौन सिमेट्रिक है, कौन एंटी सिमेट्रिक. उसी तरह से आपका पाई कैसे बनता है? पाई मैंने आपको बताया हाउ पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म. पाई बॉन्ड जो है ये बनता है आपका ओवरलैपिंग ऑफ, कैसे बनता है? तो बेसिकली इट इज फॉर्म बाय lateral overlapping. So that means suppose this is my one p orbital and this is my another p orbital. Okay, it's going to form by side on. This is called side on overlap. और जो sigma bond जो था आपका, look at the sigma bond is here. Okay, okay. Now the sigma bond is directly formed by the axial overlapping. This will be going to make a bond now, and that is the strongest one. That is a stronger interaction. Okay, this is called axial overlap, और simply we can call as a 100% overlap इसको अपन बोल सकते हैं. इसलिए ज्यादातर स्ट्रांग होते हैं बॉन्ड. अब ये वाला जो रहेगा ये क्या है? वीकर इंटरेक्शन है. दिस इज वीकर इंटरेक्शन एंड दैट इज कॉल्ड लैटरल ओवरलैप. ओके, and how they form? They form by the interaction of px with another px and py with another py. Now इसके भी दो पार्ट्स हो जाएंगे. कौन से वाला? पाई एंटी बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग. तो जैसे हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, तो आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नाम सुना होगा और सिमेट्री का भी नाम सुना होगा. उसमें हमको एक टर्म मिलती है सीखने को, इसका नाम है जिराड. T2G EG वगैरह आपने सुना होगा कभी.
जिराड एंड अनजिराड, सुना है क्या नाम इसका? ओके, जो जी होता है ना, छोटा सा छोटा जी लिखते हैं अपन उधर, T2G, सो दैट जिराड नथिंग बट दी हैविंग सेम सिमेट्री और सेंट्रोसिमेट्रिक कैरेक्टर। तो जनरली क्या होता है कि सिग्मा बॉन्डिंग इज सेंट्रोसिमेट्रिक, सेंट्रो जिराड मीन सेंट्रोसिम, जिसको सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ये वाला, and that's why in many times we can mention the G for sigma bonding and U for sigma antibond. What is G and U stand for? This is stand for G and this is stand for U. And that the terminology for Girard is a centrosymmetric. You know that s orbitals are spherical, you know s orbitals are spherical and they have center, and suppose example I just pass a line through the center, it will be cut into equal half. That type of the phenomena is called as a centrosymmetry. Centrosymmetry, that means sigma bonding region is a centrosymmetric, that's why I have mentioned the G. But sigma antibonding is not centrosymmetric, so that's why you can refer U for ungirard, U for ungirard. And similar things we have to oppose for what the antibonding and bonding for pi orbital. So here this will be my Girard and this will be my ungirard. That means it is centrosymmetric, and here this is what non-centrosymmetric. So this terminology generally helps in the finding the term symbols for the diatomic molecule. ये जो जी यू का जो कंसेप्ट है ये आपको आगे काम में आने वाला है, इसलिए फिलहाल में आप इतना याद रखो कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, पाई कब बनता है, ठीक है। Now, for that molecular orbitals, particularly this MOT theory gives idea about the magnetism, bond order, bond strength, bond energy, etc., etc. Various parameters are there. Now, we have very short trick to find the bond order in any diatomic molecule up to 20 electron. आप किसी भी 20 इलेक्ट्रॉन तक के मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आप आसानी से निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड ऑर्डर. आपको एक ऐसा टेबल बनाना है. क्या क्या करना पड़ेगा आपको कि उस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपको फाइंड करना है. जैसे एग्जांपल मान लेते हैं आपको पूछा गया कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ. फिर सीओ के टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे. कार्बन के कितने होता है एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 6 और 8 कितना हो गया 14. तो आपका यहाँ पे कितना आएगा 14 आएगा. ओके, अगर कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल कहाँ तक अप टू 20 इलेक्ट्रॉन. एग्जांपल अगर आपको पूछा गया B2 मॉलिक्यूल, सो B2 मॉलिक्यूल मतलब एक बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरा बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 10. तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 10 आएगा. ओके, मतलब हम 20 इलेक्ट्रॉन तक का बॉन्ड ऑर्डर क्विकली विद इन अ सेकंड हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट सिंपल ट्रिक. नाउ फर्स्टली मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1. ओके, 0 इलेक्ट्रॉन वाला तो होता नहीं कोई, 1 वाला लेते हैं अपन. जैसे अभी आपने देखा H2 प्लस 1 2 3 4 5, ओके 6 7 एंड 8. कितने लिए मैंने यहाँ पे 8. मतलब मैंने 8 इलेक्ट्रॉन का डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया. ठीक है, अब एग्जांपल क्वेश्चन आ गया कैसे निकालना है. मान लेते हैं आपके पास हाइड्रोजन प्लस मॉलिक्यूल है, H2 प्लस है, तो H2 प्लस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन. अगर आपने हाइड्रोजन ले लिया तो कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन. अगर आपने लिथियम 2 ले लिया तो कितना हो जाएगा, लिथियम कितना होता है 3 और 3 6. आपने He2 ले लिया तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा. ऐसे ऐसे वाले डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आपको लेने हैं. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इलेक्ट्रॉन एंड विद द 8 इलेक्ट्रॉन. ये रहा सबसे पहला टेबल. इनकी बॉन्ड ऑर्डर जनरली होती है हाफ वन हाफ जीरो हाफ वन हाफ जीरो. सो हाफ वन कैसे लिखेंगे इसको, दिस इज हाफ वन हाफ जीरो, अगेन हाफ वन हाफ जीरो. आप किसी पे भी एग्जांपल अप्लाई करके देखो, यू गेट द सेम आंसर. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. चलिए मैंने क्या किया, मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा आप करके देख सकते हैं. आपके पास ऐसा वो नहीं है कि आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. सो यू कैन व्हाट वी कैन अप्लाई फॉर ऑन एनी मॉलिक्यूल. सपोज एग्जांपल वी हैव H2 मतलब कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास. दिस इज 1s. ये मैंने ऐसा कर दिया इसको. ये रहा मेरा एनर्जी लेवल एक और एक के लिए. एक बात हमेशा याद रखना कि जब 3 टाइप के हेमोडायग्राम आपके पास प्रेजेंट है, कितने टाइप्स की 3 टाइप, जब दोनों एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 होता है, A इज इक्वल टू A, मतलब जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है 0 है. सो मान लेते हैं होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स H2 B2 C2, इन सबके एनर्जी लेवल कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे. सेम, अगर ये 1s है तो इधर का भी 1s ही रहेगा. फिर 2s अगर आ गया तो 2s भी यहीं पे रहेगा. ऐसे वाला बराबर. अब ऐसे वाले मॉलिक्यूल जिनका डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, मान लेते हैं आपके पास कुछ एग्जांपल ऐसे है CO, कार्बन और ऑक्सीजन का डिफरेंस ज्यादा कितना होता है. कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कितनी है 2.5 और ऑक्सीजन कितनी है 3.0. दोनों का अगर आप लगाओगे, सॉरी 3.5 आएगा, मतलब इनका डिफरेंस आ रहा है 1 का. तो ऐसे केसेस में आपकी एमओ डायग्राम जो है वो ऐसे हो जाएगी. इतना डिफरेंस आपका आएगा.
कितना डिफरेंस आएगा आपका, इतना आएगा। सो दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, जब डिफरेंस आपका 1 के आसपास होगा तब। अब कुछ ऐसे केसेस है जहां पे डिफरेंस आपका बहुत ज्यादा होता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कितनी होती है, 2.01 या 2.1 पकड़ लो इसे। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कितनी है, कितनी होती है, 4.0। फ्लोरीन सब हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द अमंग द ऑल एलिमेंट्स। सो इनका डिफरेंस आप निकालोगे तो 1.9, मतलब डिफरेंस 1 से ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में यमो डायग्राम जो है ये सबसे ज्यादा डिफरेंस वाली होती है। सो लेट्स टेक द एग्जांपल हियर, मतलब इनका डिफरेंस ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन इन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे इंटरेक्ट होंगे। तो जो नीचे रहेगा ना ऑर्बिटल, वो सबसे ज्यादा बॉन्डिंग में इंटरेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है क्या? जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबसे कम होती है ना, वो आसानी से बॉन्डिंग में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे एग्जांपल आपको पूछना है कि सीओ में कौन ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, तो ऑक्सीजन करेगा। एचएफ में कौन करेगा पार्टिसिपेट, तो फ्लोरीन करेगा। ओके, तो ये ऐसे 3 टाइप्स की एमओ डायग्राम आपके पास है। इट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। एक वाला जहाँ पे डिफरेंस नहीं होता है, वो ऐसे मॉलिक्यूल जो डायटोमिक्स होते हैं, होमोडायटोमिक जिसको अपन बोलेंगे, जिनमें डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। एक ऐसे वाला एग्जांपल जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और एक ऐसा एग्जांपल जहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो आपको निकलता आएगा H2 का, दिस इज मॉलिक्यूल। He2 कितना होता है, He2 में कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर, because bonding and anti-bonding both electrons are same, then it will be cancel out and you will get the zero answer. Okay, चलिए मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे, ये हो गया पहला वाला हमारा टेबल, और जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं 8। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज बॉन्ड ऑर्डर। ये रहा दूसरा टेबल हमारा, और यहाँ पे रहेगा तीसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड ऑर्डर। नाउ हियर अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे, अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, 8 से स्टार्ट करते हैं, ताकि वो आपको गिनने में समझ में आ जाए, आसानी हो जाए। 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। अब यहाँ पे जो सेकंड जो है आपका, वो है 8 से लेके 14 तक, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 to 14। और यहाँ पे मान लेते हैं हम 14 से स्टार्ट करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है, देखो 8 का कितना था, सेकंड वाले टेबल में आपको सिर्फ 0.5 ऐड करते जाना है। कितना ऐड करते जाना है, 0.5 की एडिशन आपको करनी है। फिर 0 के बाद कितना आएगा, 0.5। ओके, देन कितना आएगा, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 एंड दिस इज ऑफ 3.0। लास्ट वाला कौन सा है, 14। 14 का वापस से यही लिखो, कितना है 14 का। और इस वाले में आपको क्या करना है, -0.5 आपको कटे जाना है, -0.5। कितना हो जाएगा, पहला तो लिखो ये 3.0, उसके बाद 2.5, 2.0, 1.5, देन 1.0, 0.5 एंड 0.0। तो बाय यूजिंग दैट सिंपल टेबल वी कैन फाइंड आउट द ऑल द प्रॉपर्टी। जो हमने 4 प्रॉपर्टीज आपको पहले लिखाई है, सारी प्रॉपर्टीज आप पता कर सकते हैं जस्ट अप टू 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम जो बॉन्ड ऑर्डर होती है ना, वो है 3। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितनी है, यहाँ पे दिए देखो 14 वाली, और ये सबसे ज्यादा है इसमें, कितनी है, 3 है। सो इसका एग्जाम्पल कौन कौन है कि जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपकी सबसे ज्यादा होती है, आप फटाफट आप टेबल के हिसाब से देख के बता सकते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको लिखना है उसका बॉन्ड तो कितना आएगा, 1, ओके गुड, आगे 0, so this is 1, He2 0, that is He2 molecule never exists because you know that electron configurations are field. That's why no need to make a bond with any other system. So noble gases are generally they are always the inert, okay, except xenon. Okay, what about He2 plus 0.5, 0.5, Li2 1, 1, okay, Li2 plus 0.5, 0.5 or half one can say. Okay, what about O2 plus 2.5, 2.5, then next to 2, O2 2.0, okay, O2 minus 1.5, 1.5, O2 2 negative 1, 1, okay, B2 1, B2, okay, 1. Next to N2 plus 2.5, 2.5, okay, N2 minus 2.5, 2.5. Both have the same number of electrons or different? different, Yes, different. Okay. Next, N2 2 negative 2, 2.0. Okay. What about N2 3, 3.0? Okay. NO
2.5. Okay, NO is a 2.5. NO plus 3. 3.0. Okay. What about BN? 2. 2.0. Good. And lastly, CO, carbon monoxide, 3. 3. 3. So that means CO, that is carbon monoxide. Here, carbon monoxide, the nitrogen, the NO plus, these are called as isoelectronic molecules. Okay, because they have same number of electrons and same bond order also same structure. Okay. Now based on that, we have some type of mnemonics. First of all, the bond strength is directly proportional to bond order. Okay, if more number of bond, that is more the bond order, more will be the strength. But bond order is inversely proportional to bond length. Okay, bond strength, you know the bond strength now. Number strength means it's a that is how tough or how much amount of energy required to break the bond now. That's called the toughness. That's called the strength. Is must equal to order. For example, single bond is weaker, double bond is stronger. Double bond is weaker than what the triple bond, right? So strength is increases as per the bond order. Order means number of bond between the two bonded atoms. Okay, and length, you know that reverse case. Okay, this one. Now, what type of the questions are generally be asked in this for on this topic, particularly for MOT? Suppose you have some molecules. Example, O2 2 negative, O2 negative, O2, and O2 plus. This is the question. Now we have to arrange according to their bond strength as well as bond order. Arrange according to bond order. And one more question. O2 plus, O2, O2 2 negative, then O2 plus, O2 minus, and O2. Then it will be what easy to get your answer. Okay, so here make one more number of electron. Number of electron. O2 minus means O2 means it is 16 plus 2. It is 18 electron, right? This is what 17 electrons. This is what 16, and this is what 15. Okay, and you know the bond order. This is what bond order. For 18, it is 1. For 17, it is 1.5. For 16, it is 2.0, and for 15, it is 2.5. That means it is already arranged. Just we have to mention this is what the increasing order of bond order. Correct? For we have to arrange according to the increasing bond length now. Again, for bond length, first of all, look at the diatomic molecule. This is what O2 dinegative. This is what O2 O2 dinegative. Then O2. Okay, O2 dinegative. This is O2 negative. O2 O2 and O2 plus. Now the number of electrons in particular these molecules will be equals to O2 2 negative means 18 electron. This is 17 electron, 16 electron, and 15. Okay, and here this is what the electron. Now bond order. This is what 1, 1.5, 2, and 2.5. So here, as per the bond length concept, it must be opposed to that for the bond order. So here O2 minus, O2 2 minus will be the highest length. Okay, then O2 negative, then O2 and O2 plus. Okay, चलिए अब यहाँ पे आपके पास दो टाइप्स के एमओ डायग्राम्स हैं. द टाइप्स ऑफ एमओ डायग्राम्स. एमओ डायग्राम्स अपने पास 20 इलेक्ट्रॉन तक का जनरली इसमें हम यूज करते हैं, अप टू ऑर्डर 20 इलेक्ट्रॉन्स. और 20 इलेक्ट्रॉन तक का सिस्टम जो है वो आपको कैसे फाइंड आउट करना है यहाँ पे अपन देखेंगे शॉर्ट में. ओके, अब ऐसा होता है कि आपके पास दो टाइप्स के मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल. एक होता है लाइटर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और हेवियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. लाइटर डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब जो नाइट्रोजन के पहले वाले हैं, मतलब N2 के पहले वाले. सो लेट्स टेक एग्जांपल B2, C2, N2, देन कौन आएगा आपका O2, F2. ऐसे आपके पास मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ
कि नाइट्रोजन के बाद वाले और नाइट्रोजन के पहले वाले। तो ये वाले को अपन क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे अपन हेवियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, और इनको हम सिंपली बोलेंगे लाइटर। ठीक है, लाइटर मतलब जिनमें जिनका मास नंबर भी कम है, एटॉमिक नंबर भी कम है, ऐसे वाले। और बीच में रखते हैं अपन किसको, N2 को। सो अभी तक तो हमने देखा कि बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है, वगैरह वगैरह सब ये हमारा हो गया। अब होता क्या है यहाँ पे, सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ पी ऑर्बिटल, है ना, इनमें सब में पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो एमओ डायग्राम आपके पास दो टाइप्स की है, वो मैं पहले बता दूंगा आपको कि हाउ दे विल बी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए पहले मान लेते हैं कि ये रहा मेरा एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहला ऑर्बिटल है मेरे पास 1s, उसके बाद है मेरे पास 2s। ठीक है, इस साइड में भी वही रहेगा मेरे पास 1s 2s वगैरह, जो भी लेना है मुझे लूंगा मैं। अब देखो 1s के पास क्या होता है कि इन केस ऑफ व्हाट 1s ऑर्बिटल, 1s यहाँ पे लिखना है आपको, 1s ये रहा 1s आपका, ये रहा 2s। तो 1s क्या करेगा, ऐसे वाला बनाएगा 1s। ठीक है, ये रहा तुम्हारा इधर से। ठीक है, दिस दिस गिव राइज टू द सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना रहा है ये, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्ड, लेकिन कौन से वाला, 1s वाला। उसके बाद कौन है आपका 2s है, 2s का भी सेम आपका वही बनेगा। सो 2s से क्या बन रहा है, 2 सिग्मा, सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्ड, ये हो गया 2s तक। यानी कि अप टू 8 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई इश्यू नहीं है आपके पास। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन तक, 8 इलेक्ट्रॉन तक के आपके पास कोई इश्यू है क्या, यहाँ पे तो आपको दिक्कत नहीं जाए इसलिए मैं इधर से भी निकालता हूँ। सो दिस इज माई 1s, दिस इज माई 2s। नाउ द क्वेश्चन इज 2p। ना क्वेश्चन कौन है आपका अभी 2p, और 2p में होते हैं, p में होता है आपके पास px, py और pz। यहाँ पे क्या होता है, px और py की एनर्जी जो है वो हमेशा सेम होती है। px py ऑलवेज हैव सेम एनर्जी, बट pz इज डिफरेंट। तो आपके पास लाइटर और हेवियर के केस में, कुछ केस में आप, और हमको पता है कि सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है इनमें से, विच गोइंग टू फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड एंड विच गोइंग टू फॉर्म ए पाई बॉन्ड। चलो ठीक है, आप मत बताइएगा। pz जो है वो सिग्मा बनाएगा, और px py जो है ये पाई बनाएगा। फिर पहले किसको फिल करना है, pz को फिल करना है, यानी कि पहले सिग्मा बॉन्ड डेवलप होगा कि पाई बॉन्ड डेवलप होगा। तो ये जो है ये डिपेंड करता है आपकी एमओ डायग्राम कौन से टाइप की। तो पहली डायग्राम जो है हमारे पास वो है आपकी सिमेट्रिकल एमओ डायग्राम। पहली कौन सी डायग्राम रहेगी, सिमेट्रिकल एमओ डायग्राम। और ये किसके लिए अप्लाई होती है, सिमेट्रिकल एमओ डायग्राम जो है ये होती है हेवियर के लिए। सिमेट्रिकल एमओ डायग्राम जो है ये किसके लिए होगी आपकी, फॉर हेवियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। और हेवियर में कौन आता है, हेवियर में कौन आता है, ये सब आएंगे आपके। ठीक है, जिनका मास नंबर ज्यादा, ये सब हेवियर वाले। फिर सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में सबसे पहले हम सिग्मा 2p z को फिल करते हैं। किसको फिल करेंगे पहले, सो सिग्मा 2p z पहले फिल होगा यहाँ पे ऐसे, ये रहा तुम्हारा सिग्मा 2p z। उसके बाद तुम्हारा होगा पाई 2px पाई 2py, एंड देन अब एंटी बॉन्डिंग में जब जाएंगे हम, तो पहले ये वाला एंटी बॉन्डिंग में, और उसके बाद आपका जाएगा ये वाला। चलिए अब ये जो ऊपर के जो चार हमने लिखे हैं ये कैसे कैसे। ठीक है, तो मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, या इसको एक, ये दूसरा यहाँ पे, ये यहाँ पे और यहाँ पे। तो इनकी ऑर्डर कैसे रहेगी आपकी, कौन कौन है ये दिए हुए, ये कौन है आपका सिग्मा 2p z है, ये बॉन्डिंग है। ठीक है, उसके बाद पाई 2p x और पाई 2py, इनकी दोनों की एनर्जी कैसे रहेगी, सेम रहेगी। ये कौन है आपकी एंटी बॉन्डिंग है, पाई स्टार 2px और 2py, और ये लास्ट में कौन है, सिग्मा स्टार 2pz। तो जब ये किसके लिए है फिर, सिमेट्रिकल एमो डायग्राम फॉर विच मॉलिक्यूल्स, फॉर हेवियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। और इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा फिर, इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा, एमोस कॉन्फ़िगरेशन, एमोस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा इनका कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py एंड सिग्मा 2pz। अब यहाँ पे इनको लिखो, ये कौन है आपका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, ये कौन है एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। और ये कैसे होता है, इसको क्या बोला गया हमने, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी कि पहले 1s फिल होगा जिसकी लोवेस्ट एनर्जी होती है,
फिर उसके बाद 2s फिल होगा, फिर उसके बाद 2p जाएगा, फिर जब 2p हो जाएगा तब 3 आएगा, 3s आएगा, फिर 3p आएगा, ऐसे करते करते जाएगा। इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट, एंड दैट इज द MOT इज बेस्ड ऑन दैट LCAO अप्रोक्सीमेशन। इट्स वेरी सिंपल कांसेप्ट। ओके, अब रहा सवाल हमारा उन वाले मॉलिक्यूल के लिए जो लाइटर है, यानी कि B2C2 वगैरह वगैरह हम ले सकते हैं यहाँ पे। सो नाउ अगेन फॉर दैट वी हैव दैट द डायग्राम। पहले इसके लिए डायग्राम निकाल लेते हैं, ये वाली, जस्ट गो थ्रू दैट। देखिए दिस इज व्हाट, ये निकाल दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे। और ये रहे मेरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वन एटम, ये रहे मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ अनदर एटम, और ये क्या रहेगा मेरा एमोज ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप 1s 2s की तो बात कोई इश्यू नहीं है आपके पास। दिस इज व्हाट 1s, ये रहा मेरा 2s। सो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ। ये कौन है मेरा 1s है, 1s, दिस इज व्हाट 2s एंड 2s, ठीक है। दे गेट इंटरैक्ट एंड मेक बॉन्डिंग, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बॉन्डिंग एज वेल एज एंटीबॉन्ड। यहाँ पर भी सेम हो गया आपका बॉन्ड एंटीबॉन्ड। तो आपका पहले सिग्मा क्या बनेगा, पहले सिग्मा 1s देन सिग्मा एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी। अब जब हम बात करते हैं किसके लिए, नेक्स्ट वाले के लिए, यानी कि फॉर दिस इज व्हाट, ये कौन है आपका 2p। फॉर 2p अब आपका पहले कौन फिल होगा, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल एमो डायग्राम। और अनसिमेट्रिकल एमो डायग्राम में क्या होता है, द पाई विल बी फिल्ड फर्स्ट देन सिग्मा। ओके दिस वन, एंड बाकी जो चीजें जो थी वैसे की वैसे। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैग्नेटिज्म निकालने के लिए बहुत यहाँ पे आपको, अगर आपको ये पता नहीं ना तो आप मैग्नेटिज्म नहीं निकाल सकते। एंड दैट टाइप ऑफ द डायग्राम इज कॉल्ड एज ए अनसिमेट्रिकल डायग्राम, अनसिमेट्रिकल एमो डायग्राम फॉर दोज मॉलिक्यूल व्हिच आर इन कॉल्ड एज अ लाइटर। ओके, सो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आपका रहेगा वो कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है कैसे, दिस इज सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, उसके बाद कौन आएगा आपका सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, देन आपका कौन आ रहा है पाई 2px। मैं इसको एक दूसरे के नीचे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों की एनर्जी कैसे है, सेम है। देन व्हाट, अगेन पाई 2px, पाई 2py एंड लास्टली व्हाट द सिग्मा 2pz। तो ये ऐसे एनर्जी ऑर्डर जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ऐसे। यहाँ पे आप विच वन इज बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंड दीज आर द एंटी बॉन्ड, ठीक है, ऐसा आपका रहेगा। अब इसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें एक अलग ही टाइप की हेमोडायग्राम आपको देखने को मिलती है, जो है आपका कुल्सन, वन इज कॉल्ड एज ए कुल्सन मॉडल, है ना। जो सीओ कुल्सन एक ऐसा जो हमने टेबल सबसे पहले बनाया था ना ये वाला, इसको एक एक्सेप्शन है, दैट एक्सेप्शन इज कॉल्ड एज ए सीओ। और सीओ का एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो होता है 3.5, और इसके हिसाब से हमको कितना मिलता है, 3 मिलता है, ठीक है। तो देयर इज एन एक्सेप्शन जहाँ पे सीओ का जो बॉन्ड ऑर्डर है, और इसको एक्सप्लेन किया था किसने, कुल्सन ने, इसलिए इसको कुल्सन मॉडल ऑफ सीओ या एमो डायग्राम उसको अपन ऐसा बोल सकते हैं उसको, ठीक है। नाउ राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल whether it is a paramagnetic or diamagnetic। अब F2 मॉलिक्यूल मतलब कितने, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 9 + 9 18, ठीक है। तो 18। फटाफट कैसे लिखोगे इसको, सिग्मा 1s आएगा पहले, फिर सिग्मा 1s आ गया, आपने पहले 8 नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिग्मा 2s देन सिग्मा 2s, यहाँ तक तो आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। कैसे रहेगा आपका, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, और कौन कौन है ये, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब F2 कौन है, F2 कौन है, F2 इज ए हेवियर। Electrical। हेवियर में मतलब क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डायग्राम आपको यूज करनी पड़ेगी, मतलब सिग्मा पहले फिलअप करना पड़ेगा। तो पहले क्या आएगा आपका सिग्मा 2pz, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आएगा आपका पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, फिर कौन है आपका पाई 2px एंड पाई 2py, और फिर आएगा आपका सिग्मा 2pz, ठीक है। चलिए अब इनके क्या क्या लिखना है, इसको बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। देखो यहाँ से यहाँ तक तो आपकी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। आपको कितने लिखने हैं और, ठीक है, मतलब आपका 10 इलेक्ट्रॉन अगर आपको लिखने हैं तो पहले यहाँ पे आ जाएंगे 2, अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल चल रहा है आपका, ये हर्न्स रूल। उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन, और तीसरा कौन है, अबाउट प्रिंसिपल, राइट। यानी कि आपको ये तीनों को लेके चलना होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपन जब फिल करते हैं तो सबसे पहले क्या बताता है, अबाउट प्रिंसिपल विद इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, यानी कि जब तक आप पहली शेल कंप्लीट नहीं करते तब तक दूसरे में नहीं जा सकते। मतलब पहले फर्स्ट शेल हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसको बोलते हैं अबाउट प्रिंसिपल, राइट। और हर्न्स रूल क्या बताता है कि फर्स्ट फील्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है ऐसा, तो पहले ऐसा फील करो, उसके बाद ऐसा फील करो। अगर आपके पास 2 ऑर्बिटल है, सो फर्स्ट वी हैव टू फील सिंगली एंड देन स्टार्ट पेयरिंग,
दिस इज कॉल्ड हंस रूल। अब एक लास्ट का जो है दैट इज कॉल्ड पॉली। पॉली क्या बताता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अब क्वांटम नंबर क्या है ये अपन कभी एक आध लेक्चर में पढ़ेंगे। व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये चारों क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के कभी सेम नहीं हो सकते। एटलीस्ट वन ऑफ द क्वांटम नंबर शुड बी अ डिफरेंट। तो दैट इज कॉल्ड द पॉली। तो ये तीनों रूल को आपको लेके फिल करना होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम पहुंचे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, दो आपके यहाँ पे आ गए, दो यहाँ पे आ गए, कितने हो गए आपके? 6 के बाद 7 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ तक पहुंच गया? पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई तक पहुंच गया। अब हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाली जाती है अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा उसका, ठीक है। अगर आपने 8 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, कहाँ पे? बीएमओ माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन काउंट करो बॉन्डिंग में कितने कितने। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करना है। बॉन्डिंग कहाँ पे? एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, बराबर है। ये क्या है आपके बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने हो रहे इलेक्ट्रॉन आपके? 2 + 2 + कितने? 4 2 6 2 8 2 10, बराबर है। 10 आ गए बॉन्डिंग। अब निकालो एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? कितने अच्छा डायरेक्ट आंसर है आपका। सो व्हाट टू, ये कितना आ जाएगा? 1/2। सो इट मस्ट बी 1। सो दैट फ्लोरीन फ्लोरीन having got a single bond। और एक फ्लोरीन हमको पता है कि उसका, इसलिए हाइड्रोजन्स आर जनरली मोनो एटॉमिक। ऑल हाइड्रोजन्स आर, सॉरी, दे हैव सिंगल बॉन्ड जनरली। सो Cl2 Br2 F2 I2 वगैरह वगैरह सब हम देख सकते हैं। समझ में आ गया कैसे निकालना है? तो फिर तो वेदर इट इज अ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? म्यू, ये आपका वीबीटी से आया हुआ है, ये मैं डायरेक्ट वहां से ले रहा हूँ। √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटा। सिंपल सा फॉर्मूला है ये लगाने का। सो वेयर n इज a नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है नहीं, जीरो। दैट्स व्हाई इट इज a डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल, ठीक है। एनो का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उसके बाद निकालो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, वो सब चीजें आप निकाल सकते हैं। क्या रहेगा कॉन्फ़िगरेशन इसका? कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? एनो में कितने होते हैं? 15। आपको 15 इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? σ1s, σ1s, σ2s, σ2s। यहाँ तक तो आप कोई भी सिस्टम रहने तो आपका सेम रहेगा आपका, ठीक है। सो दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। दिस इज बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका अभी? pi, नेक्स्ट क्या रहेगा? दिस इज हेवियर ना। ओके, ये 11 12 13 14 और 15, मतलब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे जा रहा है इसका? सो दैट इज कॉल्ड एज अ होमो। व्हाट इज होमो नाउ? हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन है ये? π2px। कौन? एंटी बॉन्डिंग। इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, मतलब आपका मैग्नेटिक मोमेंट समथिंग 1 पॉइंट के आसपास आएगा। सो दिस इज अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, ओके। और बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? NO+ एंड CO, ठीक है। तो यहाँ पे अपन रुक जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द MOT ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ओके।